एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स, और ये जो वीडियो जो प्रेजेंट है ये पूरा रिवीजन फॉर्म में चलेगा। बहुत ही छोटे टाइम में हम बहुत सारे टेक्निक्स को रिवाइज करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करके हम पार्ट बी का एज वेल एज पार्ट सी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स, ये जो हम अब आज डिस्कस करेंगे रिवीजन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक से पार्ट बी का एज वेल एज पार्ट सी का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली पार्ट सी में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, मैथ द कलम, अगर कुछ टेक्निक्स दिया जाएगा और उसका फंक्शन क्या है, किस लिए वो टेक्निक यूज किया जाता है, वो पूछ सकता है। एज वेल एज ये कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से भी ये यूज हो सकता है। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस टेक्निक्स का रिविजन। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए और डीएनए का प्रेजेंस है या नहीं, इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। ब्लॉटिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉटिंग्स भी प्रेजेंट रहते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। हमारे डीएनए को जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो ब्लॉटिंग चाहिए वो होता है साउदर्न ब्लॉटिंग। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिकली डिटेक्टिंग द डीएनए और आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक जीन इन द डीएनए। को स्पेसिफिक जीन अगर प्रेजेंट होगा एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द डीएनए, सो इन दैट केस साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड। ओके। नेक्स्ट टेक्निक इज द फिश कब यूज होगा, जब क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मलिटीज होगा एंड वी वांट टू डिटेक्ट दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द फिश एसे इज यूज। इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल सकता है, बट नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली द टेक्निक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स प्रेजेंट एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर द टेक्निक्स। ओके। द नेक्स्ट टेक्निक इज अ डीएनए माइक्रो एरे। ये जो डीएनए माइक्रो एरे जो प्रेजेंट है, व्हाई इट इज यूज फॉर 1000 जीन सीक्वेंस साइमल्टेनियसली क्या होगा इस डीएनए माइक्रो एरे का टेक्निक से, साइमल्टेनियसली बहुत सारा जीन्स को हम सिक्वेंस कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा डीएनए के बारे में। नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जो कि है हमारा आरएनए के बारे में। अगर हम आरएनए के बारे में हम बात करेंगे, फॉर डिटेक्टिंग द स्टार्ट साइट को डिटेक्ट करने के लिए एक एसे चाहिए। व्हाट इज दैट, इट इज द S1 एंडोन्यूक्लियस मैपिंग। ये कैसे होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेस। ये टेक्निक का नाम है रेस। ये 5 प्राइम एंड को भी आइडेंटिफाई कर सकता है एज वेल एज 3 प्राइम एंड को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। 5 प्राइम के लिए क्या चाहिए, 5 प्राइम रेस चाहिए, और 3 प्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए 3 प्राइम रेस। ओके। नेक्स्ट आरएनए, हम बेसिकली आरएनए क्यों यूज करेंगे, फॉर सीइंग द एक्सप्रेशन लेवल। ओके। अगर कुछ जीन का एक्सप्रेशन लेवल हमको स्टडी करना है, सम जीन इज एक्सप्रेसिंग मोर और सम जीन इज एक्सप्रेसिंग लेस, कुछ ससेप्टेबल वेराइटी, अगर प्लांट का कुछ ससेप्टेबल वेराइटी होगा, उस ससेप्टेबल वेराइटी के लिए भी कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस टाइप ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई और वी कैन टेल दैट इनका एक्सप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए वी कैन यूज अ एक्सप्रेशन सिस्टम। ओके। ये जो एक्सप्रेशन जो सिस्टम जो प्रेजेंट है, ये सिंगल जीन का एक्सप्रेशन चेक करने के लिए कौन चाहिए, वी कैन यूज अ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर मतलब रियल टाइम पीसीआर। कुछ रियल टाइम सिचुएशन में कितना लेवल ऑफ जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, वी कैन आइडेंटिफाई दैट। ओके। ये जो एक्सप्रेशन सिंगल जीन का भी हो सकता है एज वेल एज मल्टीपल जीन का भी हो सकता है। अगर हम सिंगल जीन का एक्सप्रेशन चेक करना है हमें, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन यूज अ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और आरटी-पीसीआर, दैट इज नोन एज अ रियल टाइम पीसीआर। ओके। नेक्स्ट, if we want to see the expression level of multiple genes, during that time we can use a in vivo or in vitro assays. Okay, in case of in vivo assay comes a fish and RNA seq, and in case of in vitro assay comes a microarray, RT-PCR and the northern blotting. ठीक है। जो RT-PCR जो वो हम यूज़ करेंगे एज वेल एज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करेंगे। ये बहुत सिंगल जीन के लिए और मल्टीपल जीन के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हम देखेंगे इन विट्रो कंडीशन में क्या हो रहा है, in that case we can use a microarray, RT-PCR and the northern blotting. अगर हम देखेंगे इन विवो कंडीशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन सी द fish and RNA sequencing. Next is the rigged. Okay.
इन द रेट कम्स द रन ऑफ एसे। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, ये जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है इसका इंटरेक्शन डीएनए के साथ हो रहा है या प्रोटीन के साथ हो रहा है, अगर स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ हो रहा है, इन तीनों के हिसाब से हम फिर से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर डीएनए और प्रोटीन का कुछ इंटरेक्शन होगा, हाउ कैन वी नो दैट इस डीएनए के साथ इस प्रोटीन का इंटरेक्शन हो रहा है? सो फॉर दैट वी कैन यूज अ चिप एसे, इम्सा एज वेल एज डीएनए's फुट प्रिंटिंग एसे। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए चाहिए को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एंड इज टू हाइब्रिडाइजेशन एसे। ओके, और क्या चाहिए? फ्रेट और पुल डाउन एसे भी हो सकता है। वी कैन यूज द को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इज टू हाइब्रिडाइजेशन एसे, फ्रेट और पुल डाउन एसे फॉर सीइंग द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। Okay, and if you want to see that some specific protein is interacting, so during that time what we can use? We can use a Western blotting, mass spectroscopy and immunotechnique for seeing the specific protein. If the specific protein is working, what will be its function? So for that we are using the Western blotting, mass spectrometry as well as immunotechniques. Okay, so now there are different other systems for this techniques also. So for the cloning vector, why we are using cloning vector? What do you mean by vector? Vector is a system in which we can, or we can tell that vector is just a plasmid in which we can construct a recombinant vector. That means the gene of interest can be cloned into a vector system. Okay, why? Because we have to transfer the gene into some of the host body. That is the reason we want to clone and make it according to us. The desired gene can be cloned inside the vector. Okay, so why this cloning vector is required? It is required for foreign gene transfer. Okay, next, neomycin TK gene cassette. So this neomycin and TK gene cassette which is used, it is used for studying the gene knockout or knock-in experiments. Next is the PCR. As we know that PCR is just a simple technique for amplifying the DNA as well as constructing the cDNA. Next is RAS. We have already discussed that 3' RAS as well as 5' RAS for 3' or 5' end analysis. Next is the RFLP, RAPD, AFLP. These are the molecular markers. So different molecular markers have different type of functions, like RFLP, random fragment length polymorphism. So why it is used? It is used for parental or criminal analysis. Next is the RAPD. Okay, random amplified polymorphic DNA. It is used for evolutionary studies. Next is the AFLP. Why it is used? AFLP means amplified fragment length polymorphism. It is used for analysis of the DNA or pedigree analysis. Next, hybridoma technique. This hybridoma technique which is present, it is used for monoclonal antibody production. Next comes the RIA. RIA is used for quantitative as qualitative analysis of different type of hormones. So RIA and ELISA are nearly similar, like it is used for some of the hormones like antigens, and ELISA is also used for this antigen and antibody. Both it can be used for the qualitative and quantitative analysis. Okay. Next is a chip which is known as chromatin immunoprecipitation. It is used for the selection or for knowing the chromosomal deletions, abnormalities, or there is some addition in the chromosomes. So basically it is used for studying the chromosomes. Okay, next comes the flow cytometry. Flow cytometry, it is used for studying the cell morphology as well as cell function. Next comes the FACS. FACS is used for sorting the cell according to the size of the cell. This can be differentiated. Next comes the Southern blotting. Southern blotting, why it is used? Southern blotting, it is used for seeing that whether there is a presence of DNA or not. Also for the detection of the DNA, the Southern blotting is used. Next, Northern blotting. Northern blotting is for RNA. Western blotting, it is for protein. So how can you remember this? It is by snowdrop. Okay, Southern blotting for DNA, Northern blotting for RNA, Western blotting for protein.
Okay. Next, DNA microarray. So DNA microarray is used for seeing many gene expression analysis. Multiple gene when they are expressed, its analysis can be done by DNA microarray. Okay. Next is the UV visible spectroscopy. So UV visible spectroscopy, it is used for concentration determination of both DNA as well as RNA. Okay. Next is CD spectrophotometer. It is used for seeing the protein's secondary structure. Next is NMR. NMR, it is used for seeing the protein's tertiary structure determination. X-ray. Why this X-ray is used? It is used for seeing the DNA structure, protein 3D structure. Mass spectrometry. It is used for seeing the mass of the biomolecules. Next is IR spectroscopy. It is used for identification of functional group. If there is some of the functional group in the amino acids or the proteins, so this IR spectroscopy can be used for identifying the functional group. Next is a fluorescence spectroscopy. Fluorescence spectroscopy is used for seeing the organic group. If some organic group is present in some of the compound in some of the sample, if there is presence of some organic compound, so for the determination it can be used, that is the fluorescence spectroscopy can be used. Next is light microscopy. Light microscopy can be used for detecting the 2D image of cell and as well as large organelles. Large organelles can also be used for seeing this. Next is confocal microscopy. Confocal microscopy which is present, it is used for seeing the 3D image of tissues and cells. Next is phase contrast microscopy. This phase contrast microscopy which is present, it is used for seeing the living natural cell. If we want to see the natural cell, we cannot see that by light microscopy. So for that we require a high-end microscopy, that is known as a phase contrast microscopy. Thank you everyone for watching this video. I hope this 10 minutes will be very helpful for you for solving some of the questions. So these techniques which are present, if you read the detail in a detailed way, you can see the learn the whole mechanism, as well as you will be very clear. But by this also you can solve some of the questions which are asked in the following way.